स्वागत है तुम्हारा। आज खुलेंगे मैथ्स का पिटारा, पहुंचाएंगे फ्रैक्शंस के पार्ट 2 का ढोलक। मैं हूँ अमित मोदक। Yes, students, very warm welcome to this amazing video, and we are on the series of IMO, and today we are beating the ढोलक of fractions, और आज हमारा लेक्चर 2 या उसके पार्ट 2 बोल सकते हैं। सो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो ढोलक, डम डमाडम ढम ढोलक। तो आज हम लोग फ्रैक्शंस के ढोलक फिर से बजाने वाले हैं, और आज हमारा पार्ट 2 है। सो अगर किसी ने मिस कर दिया पार्ट 1 में, और ये मैं बता रहा हूं ग्रेड 5 के लिए ये हमारा चैप्टर है, ग्रेड 5। सो हमारा लास्ट जो सेक्शन है, जो लास्ट वीडियो है, अगर किसी ने मिस कर गया तो उसको जल्दी से पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के बाद में देख लेना, और उसके लिंक्स वगैरह भी दिए होंगे। सो एक बार हम लोग क्विक रिकैप कर लेते हैं। अगर मिस भी हो गया तो क्या क्या चीजें मिस हुआ, उसको कंप्लीट वीडियो डाला हुआ है, यू कैन लुक इनटू दैट। ओके, सो व्हाट आर द थिंग्स वी लर्नड इन द प्रीवियस सेशन, एक बार जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं। और अगर किसी ने मिस कर दिया तो उसको कंप्लीट डिटेल्स यू कैन गेट ऑन दिस VOS चैनल, या फिर वेदांतु यंग वंडर्स पे पूरा वीडियो मिल जाएगा। ओके, सो किसी ने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया इस फैंटास्टिक चैनल को, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑन राइट टाइम स्टूडेंट्स। ओके, तो जल्दी से हम लोग एक क्विक रिकैप करते हैं। तो अपने लास्ट सेक्शन में हमने देखा एक इंट्रोडक्शन पार्ट कि भाई फ्रैक्शंस होता क्या है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, उस पे ऑपरेशंस हमने किया। सो फ्रैक्शंस में हम लोग a बाई बी फॉर्म में लिखते हैं, और b में जो होता है हमारा जो डिनोमिनेटर होता है और एक न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर को हम लोग 0 नहीं लेते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग फ्रैक्शंस की टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में हमने देखा था लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शंस। फिर उसमें हमने देखा था लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस हो जाते हैं जहां पे हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है। अनलाइक फ्रैक्शंस वो हो गए जहां पे हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। प्रॉपर फ्रैक्शंस जहां पे हमारा न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जहां हमारा न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। यूनिट फ्रैक्शंस वो हो गए जहां पे हमारा न्यूमरेटर्स 1 रहते हैं। और हमारा मिक्स फ्रैक्शन जहां पे हमारा एक होल नंबर होता है और एक मिक्स्ड एक होल नंबर होता है और एक हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो कंप्लीट वीडियोस के डिटेल्स में बनाया हुआ है, यू कैन गो इन दैट एंड यू कैन लुक दैट पार्ट। ओके, इसके अलावा हमने देखा था कि हाउ वी कैन कन्वर्ट एन अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि अनलाइक को अगर हमें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, अनलाइक मतलब डिनोमिनेटर्स हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हो, तो उनको हम लोग एलसीएम लेके, डिनोमिनेटर्स के एलसीएम लेके उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा मिक्स फ्रैक्शन जो है उसको इम्प्रॉपर में कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने देखा था डिनोमिनेटर को होल पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद न्यूमरेटर को ऐड करके टोटल बाय डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। ओके, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 3/5 है, तो इसको क्या करेंगे 2 into 5। ठीक है, हमारा यहाँ पे क्वोशिएंट होता है, या फिर यहाँ पे कह सकते हैं ये हमारा होल पार्ट है, नॉट क्वोशिएंट, यहाँ पे कहेंगे कि होल पार्ट है ये। 2 into 5 हो गया, 2 into 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5, तो 2 5s are 10, 10 प्लस 3 13, 13/5 हो गया। तो ये बन गया मिक्स्ड फ्रैक्शन से एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो न्यूमरेटर हमारा बड़ा है डिनोमिनेटर से। ओके, अब जैसे यहाँ पे एक टू कन्वर्ट एन अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल 1/2 ले लेता हूँ और एक ले लेता हूँ 3/5। अब इसे मुझे क्या करना है, अनलाइक है ये, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर्स अलग अलग दिख रहे हैं, इनको लाइक बनाना है। तो क्या करें, 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है 10। ठीक है, 2 और 5 का एलसीएम होगा 10, तो उसको क्या कर सकते हैं 1/2 इंटू 5 ऊपर नीचे करेंगे तो 5/10, एंड उसी तरह से 3/5
इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/10. So 5/10 and 6/10 are like fractions because the denominator becomes same. ठीक है, तो ये हमने डिटेल्स में कर रखा है. नेक्स्ट इसके बाद हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हमारा एक क्वोशिएंट आता है, एक रिमाइंडर, एक डिवाइजर. जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास 15/7 है, तो 15 को अगर अपन क्या करें 7 से डिवाइड करें, 7 2 14, रिमाइंडर कितना होता है 1. तो लिख सकते हैं क्वोशिएंट, ये आ गया हमारा क्वोशिएंट, यहाँ पे 2, रिमाइंडर हमारा 1 डिवाइडेड बाय 7. 7 2 14 प्लस 1 15/7 हो गया 15/7. सो बहुत ही इजी है. इसके अलावा हम लोग कंपेयर कर सकते हैं फ्रैक्शंस को. अब कंपैरिजन में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके न्यूमरेटर्स को सेम बना सकते हैं, या न्यूमरेटर्स हमारे पास अगर सेम हो तो हमारा कंडीशन एक होता है, एक हमारा डिनोमिनेटर्स को सेम बना के न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं. ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग केसेस हो सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको कंपेयर करना सीखें. ओके, चलो. So let us move forward and learn how to add or subtract fractions, and then after how to perform multiplication and division on fractions. तो comparison वगैरह जितने भी questions हमने details में कर रखा है, you can once again I can repeat that you can just look at complete on that video. तो आगे हम लोग बढ़ते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लर्न हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शंस. आज हम लोग ऑपरेशन सीखेंगे किस पे, एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे, एंड देन आफ्टर उसके बाद हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स ऑन फ्रैक्शंस. once again let me repeat, this is for the grade 5 part 2 of the fractions. ठीक है, चलो. तो सबसे पहले समझते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो अगर हम लोग मान लेते हैं लाइक फ्रैक्शंस लेते हैं, so the sum or difference of like fractions is a fraction with the same denominator as its denominator and the sum or difference of the numerators as its numerator. तो हम लोग क्या करेंगे कि like fractions अगर हमारे पास हो तो उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना. ओके, सो रिमेंबर एक चीज और याद रख सकते हैं कि इफ द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज नॉट इन द लोएस्ट टर्म, तो हम लोग उसको कोशिश करेंगे जो हमारे पास जो रिजल्ट आए, ऑलवेज विल ट्राई टू रिटेन इट इन द टर्म्स ऑफ लोएस्ट. ठीक है, लोएस्ट टर्म्स मतलब उसके एचसीएफ जो होंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वो 1 होने चाहिए. ओके, तो एग्जांपल्स लेंगे, सारी चीजें डिटेल्स में आराम से समझ में आता जाएगा. ओके, तो अगर हमें एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस अगर अनलाइक फ्रैक्शंस है तो उस केस में हम लोग को उसको लाइक बनाएंगे और फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं, और अदरवाइज ये कर सकते हैं कि हम लोग एलसीएम लेके उसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो चलिए क्वेश्चंस के माध्यम से ज्यादा बेहतर समझ आएगा. तो जैसे हियर वी हैव एन एग्जांपल ऑफ फाइंड द सम ऑफ 8/15 प्लस 7/15. सो दिस इज अ लाइक फ्रैक्शन. अब यहां पे हमारे पास लाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है, बहुत ही सिंपल वे में कर लेंगे. क्योंकि हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस है, डिनोमिनेटर सेम है, सो 15 और 15 का एलसीएम हम लोग सिंपली देखेंगे 15 ही आएगा. राइट, तो टेंशन ही नहीं लेना है. अब 8 + 7 ये तो सिंपल ही आ जाना है. 15 यहाँ पे बहुत गड़बड़ होता है, देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना है. यहाँ पे हमारे पास क्या है 15, एलसीएम कितना है 15, 15 इंटू कितना करे तो 15 आएगा 1. अब वो 1 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, मतलब यहाँ पे कहने को मतलब है 1 इंटू 8 हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है 1 इंटू 7. सो 1 इंटू 8 8 प्लस 1 इंटू 7 इज 7/15. तो 8 + 7 कितना होगा 15/15. अब चूंकि हमें इसको लोएस्ट टर्म में कट करना है तो 15 और 15 कट जाएगा, 15 1 सा 15 1 सा. सो हमारा आंसर आता है 1. सो कुल मिला के हमारा आंसर आता है 1. ठीक है, चलो एक दूसरा सवाल लेते हैं. सिंप्लीफाई. अब जैसे एडिशन वैसे सब्ट्रैक्शन भी होता है, तो सिंप्लीफाई करना है हमें 8/9 माइनस 7/2. 8/9 पहले समझ लेते हैं फिर करेंगे. ठीक है, तो 8/9 माइनस 7/2 बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा, बहुत अच्छी बात, वेल एंड गुड.
अगर हमारे पास 9 यहाँ पे है और यहाँ पे 12 है, अब इस केस में हमारे पास ये अनलाइक फ्रैक्शन का केस है, अनलाइक फ्रैक्शन का केस है जिसमें हमारा डिनोमिनेटर्स डिफरेंट दिख रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे किसका, 9 और 12 का, 9 और 12 का एलसीएम लेंगे। जैसे कि हमें पता है 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो एलसीएम हमारा आता है 3 इंटू 3 इंटू 4, 3 3 ज़ा 9, 4 ज़ा 36। ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पे बहुत मिस्टेक होता है, फ्रैक्शंस को एडिशन सब्ट्रैक्शन में काफी दिक्कत आ जाता है, भूल जाते हैं कैसे करते हैं। वो सिंपली क्या करेंगे, 9 और 7 यहाँ 36 लिखेंगे, 8 प्लस 8 माइनस 7 कर देंगे, 1 लिख देंगे। नहीं करना है ऐसे, समझना है ध्यान से। 9 के साथ हम लोग सोचेंगे 9 के साथ कितना मल्टीप्लाई करते हैं ताकि 36 आएगा, 9 4, ठीक है, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36। अब वो जो 4 आता है, व्हाट वी गेट as a quotient as 4. So that 4 is being multiplied with 8. ठीक है, ये 8 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 के साथ। ठीक है, 9 4 ज़ा 36, 4 इंटू 8 माइनस, अब देखो 12 कितना ज़ा होगा, 12 3 ज़ा 36, अब वही 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 7 ज़ा, तो ये हमारा क्या आता है, 4 8 ज़ा 32 माइनस 3 7 ज़ा 21 माइनस, सॉरी बाय 36, ठीक है, 32, 4 8 ज़ा 32 माइनस 3 7 ज़ा 21 बाय 36। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 माइनस 2 इज 1, 2 माइनस 1 इज 1 बाय 36। ये हमारा आंसर आता है। जैसे मैंने कहा ना कि अनलाइक फ्रैक्शन इसको लाइक भी कर सकते हैं। देखो अगर हमारा एलसीएम आता है 36, तो 8/9 को अगर हम लोग देखो, इसको अगर दूसरे वे में थोड़ा समझे तो 4 से मल्टीप्लाई वैसे भी तो करना है ऊपर, तो 8 4 जा देखो 32, 9 4 जा 36, वैसे ही 7/12 को करेंगे तो 12 3 जा ऊपर नीचे करेंगे 21/36, यही तो कर रहे हैं, 32 माइनस 20/21/36, यही तो हो रहा है। बट रादर देन साइड में जाके हमें को बार बार उसे मल्टीप्लाई करने से बेहतर है हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम लेंगे और इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, आई विल टेक मोर एग्जाम्पल, डोंट वरी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स लेंगे। चलो एक बार और कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोज लेट्स से मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं 4/7, ठीक है, प्लस 3/8। ठीक है, तो क्या करें, 7 और 8, 7 और 8 का क्या लेंगे, एलसीएम। तो 7 और 8 का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, क्योंकि ये दोनों हमारा प्राइम नंबर है, तो 8 7 जा 56 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या करना है, 7 के साथ सोचेंगे कितना सा 56 होगा, 7 8 सा, और वो 8, that 8 gets multiplied with the 4, okay, to make it a, to make it a what, to make it a like fraction. Okay, so 8, similarly 8 into 7 56, 7 into 3 ये वाला हो जाएगा, 7 into 3 लिखो, 3 into 7 एक ही बात है। So this is how it becomes 32 21/56. So answer comes 3 plus 2 is 5, 2 plus 1 is 3, 53/56. Is it in lowest term? Yes. Okay, similarly if I take another example, let's say 1/10. Okay, let's say 1/10 minus 4 by, let's say we have let's say 50. Okay, we have 1/10 minus 4/50. So what we'll do, we'll take first LCM and that only make it a the like fractions only. ये तो अभी unlike दिख रहा है, but वो basically हम लोग वही चीज कर रहे हैं. So let's understand how. 10 और 50 का अगर LCM लेते हैं तो it will come 10 50. If I take as a 10, okay, or I take as a prime numbers 5, let's say 5 2s are 10, 5 10s are, again we can take 2 2 1s are, 2 5s are. So ultimately 5 2s are 10, 5s are 50. What LCM we are getting, 50. So 10, how much, 10 should be multiplied by how much, so that get 50, 5. Okay, 10 5s are 50, so 5 gets multiplied with 1 minus
50 ones are 1 into 4. So we get 5 minus 4 by 50. That is 1 by 50. And that is what our answer is. So this is how we solve regarding the addition or subtraction of our fractions. Okay, students. So let's move ahead. Now comes our multiplication of fractions. What is the rule? What we do in multiplication of fractions, or as we say, the product of fractions. So in that case, what we do is, let's say we have a fraction as we represent it in a form of a by b, okay, or c by d. So let's say we are assuming as a by b and c by d as a fraction, where b and d are not equal to 0, okay. So what we do is simply we will multiply the numerators part, a into c, okay, considering that they are in the lowest terms, okay. So let's say we are multiplying a into c upon or over b into d, a into c over b into d, simple. Next comes, okay, reciprocal of fraction. But before to that, let me take one example here. Let's say we have a 3 by 4 into, let's say, 1 by 8. So what we'll do, as they are in the lowest term, so simply multiply 3 into 1, it's 3, 4 into 8, 32. Let's say we have a suppose 5 by 7 into 3 by, let's say 3 by let's say 7. So 5 threes are 15, 7 into 7, 49. That's it. So that is what we do in the multiplication of fraction. Next comes reciprocal of fraction. Now what is this reciprocal? It's very important to understand. Two fractions are said to be the reciprocal of each other if their product is 1. Two fractions, try to understand, two fractions, okay, two fractions, let's say we have a 4 by 5, let's say. Now two fractions are said to be the reciprocal of each other if their product is 1. So what should I multiply here to get a 1? With 4 by 5, what should I multiply to get a 1? It is only possible to get if I multiply with 5 by 4, so that they can get cancelled. Numerator, denominator, numerator, denominator. Yes, by crisscross, yes, they can. Okay, it's not about only 4 by 5 in this part. They can cross also. Okay, one numerator should be there, one denominator should be there. So yes, that is being equal to the left hand side and the right hand side. That's equal to 1. So what we can say that in general, if let's say if our fraction is a by b and that's a non-zero, a by b is a non-zero, as I am continuously saying, b shouldn't be equal to 0, okay, in case of fraction. So a by b is a non-zero fraction. In that case, what will it get converted into? It becomes b by a, okay. So we are considering a by b to be a non-zero fraction. In that case only we do make the reciprocals, like 1 by 0 in mathematics we do not define it, okay, that you will learn in higher classes. So we will take the fraction here a by b as a non-zero. So if I have, let's say, 7 by 19 as a fraction, then the reciprocal will be reciprocal. We always say it is a reciprocal. Reciprocal will be just reversing the numerator and denominator, swapping the numerator and denominator. 19 by 7. So if a by b is a fraction, b by a becomes its reciprocal. And it says, as I mentioned, will always take a non-zero. So reciprocal of 0 does not exist. Reciprocal of 0 does not exist. Because if I take 0 by 1, 1 by 0 is not defined. So it does not exist. Okay, let's move ahead. Next comes very important once again, division of fractions. Okay, till now we have covered the addition, subtraction, multiplication, and now last comes division of fractions. Now to divide a fraction by another fraction, the first fraction is multiplied by the reciprocal of the second.
The first fraction is being multiplied by the reciprocal of the second. Like if I have a fraction, let's say a by b, divide by c by d. What we get is a by b into, very important to remember, whenever we get a reciprocal or whenever we get a fraction getting divided by another fraction, very important to note that we replace the divide sign with a into and do the reciprocal of the we can say the denominator part. So what we find is c by d getting reversed. Okay, it gets swapped by d by c and we get a divide sign replaced by into sign. Now why do we this? We always, what it is being taught is like, okay, this is the rule, a by b into d by c if it is divided by c by d. But very rarely it is being told why it is being done. See, I'm explaining. Suppose if we have 5 divided by 10. It's easy, right? To write 5 by 10. It's easy. It's easy to say 5 by 10. Simple. But when the case comes like 5 by 3, divide by 4 by, let's say, 7. In such cases, it is also something you can consider this part like this. Okay, 5 by 3 divided by this part, that is 4 by 7. Don't you think it's being clumsy? It's becoming bigger to write every time 5 by 3 whole divide by 4 by 7. Okay, so it looks like consuming more space and it's be a little bit of difficulty to solve. So to resolve such problem, to eradicate such issues, what is being done is thinking of like, okay, 4 by 7 is there, let's multiply it. Let's multiply it with 7 by 4. Let's multiply it with 7 by 4, taking the reciprocal of it. Now, as we all know that two fractions, okay, two fractions, if one of the fraction is being multiplied with the reciprocal of the number, it gives the product as 1. Now, if I am doing a change in the denominator part as 4 by 7 into 7 by 4, that means I am changing that part. But I cannot change that, right? So I need to adjust it. So what we do is we multiply 7 by 4 on the above part also. And therefore it gets cancelled like this way. And what is left behind? 5 by 3 into 7 by 4. Did you find that this divide sign got replaced by into and this 4 by 7 got reciprocal of it? And that is what we always remember, that whenever we get a fraction, two fractions and need to be divided, simply we will keep the first one as it is, replace the divide sign with the into and do the reciprocal of the second term. Okay, so let's take an example to understand better. Suppose I take an example of 2 by 9 divided by 4 by suppose 12. Okay, 4 by 12. So what we do is 2 by 9 as it is, divide will get replaced with into and we'll do the reciprocal of it, 12 by 4. Now it's very simple, we can divide it. 4 ones are 4, 4 threes are 12, 3 ones are 3, 3 threes are 9. So what we get? Ultimately 2 into 1 is 2 divided by 3. So this is our answer and it's being the lowest term. It's being the lowest term. So we should always bring the answer in the lowest term only. And this is how we do the divide part. So now we have covered the four things, four operations which we can do on the fractions.
addition, subtraction, multiplication, division. All right, let's have another question here. So let's say here we have a question 7 by 9, divide 7 by 9 by 2 by 3. So what we can see here, very simple, 7 by 9 divide 2 by 3. So if someone would have written like this, it would look so clumsy, taking more space. So rather than doing like this, we can simply write 7 by 9 into, taking the reciprocal of 2 by 3 is 3 by 2, and we can cancel it. 3 ones are 3, 3 threes are 9. So 7 into 1 is 7, 3 into 2 is 6, and that's what the lowest term it is. Okay, wonderful. So students, are you all getting them right on the chat box? Pakka pakka. Right, that it's pakka pakka, sir. That we are getting the things, huh? All right then. So very interesting. Now it's the quiz time. So you have been waiting for this. I won't make you wait much more longer. So this is the best time you get here. You understand all the concept. जितना भी समझ में आया अभी फोड़ डालने का. हाँ, तो जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ फोड़ने का या नहीं. Yes or no? Super, my amazing bacha party. Super, super. Chalo then, let's have the first question and you will write the answers on the chat box. Huh? Chalo. First question on your screen, here it is. What type of fraction is the sum 5 by 8 plus 4 by 8? What type of fractions? If जो sum होगा 5 by 8 plus 4 by 8 किस तरह का एक फ्रैक्शन है? क्या वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या वो एक इम्प्रॉपर है, क्या वो एक मिक्स्ड है, या एक यूनिट फ्रैक्शन है? Pause the video, solve it, and write the option on the chat box. All right, so let's look into the answer. So if it's your improper fractions, B option है बिल्कुल सही. It's a like term, 5 by 8, 4 by 8. Simply add हो जाएगा LCM 8. 5 plus 4, 9 by 8. And since the numerator is greater than the denominator, okay, so बिल्कुल ये हमारा होगा improper fraction. Alright, let's move on to the next question. The sum of the fractions 5, 3 by 8 and 5 by 16 is. Once again, I would ask to make the video on pause and जल्दी से सॉल्व करके चैट बॉक्स में लिखो A, B, C या D. क्या लगता है? What do you think, students? The sum of the fractions 5, 3 by 8 and 5 by 16 is. Alright, let's move into the option side and let's get started in 3, 2, 1. Here it is. 91 by 16. So if your answer is 91 by 16, wonderful, wonderful. So let me help you if you couldn't. 5, 3 by 8. Let's first convert into improper. So first what we do is 8 into 5 plus 3. 8 is a 40, 43, 43 by 8 plus 5 by 16. Now since they are unlike terms, what we'll do, we'll take the LCM. So 8 and 16, if you take the LCM, we will get a 16. So 8 ones are 8, 8 twos are 16, and that 2 gets multiplied with 43. So 2 into 43 plus 16 ones are, so 1 gets multiplied with 5. So 43 into 2, that's 86 plus 5 upon, yeah, over 16. 86 plus 5 is 91. 91 over 16 is our answer. All right, let's move on to the next question, dear. Here is our next question. The sum of two fractions is 3 by 5. The sum of two fractions is 3 by 5. If one of the fraction is 7 by 12, then find the difference of the two fractions. The sum of two fractions.
The sum of two fractions is 3 by 5. If one of the fraction is 7 by 12, then find the difference of two fractions. Once again, I would request everyone to pause on the video, solve it and write on the chat box. Okay, so let's look on. So if your answer is 17 by 30, super amazing, fantabulous students, fantabulous. So let's see the solution of this question. It's given sum of the two fraction is 3 by 5 if one of the fraction is 7 by 2. So one of the fraction 7 by 12, okay, and sum is 3 by 5. So other fraction will be subtracting one of the fraction from the sum. So 12 and 5, the LCM is 60. Okay, if you take the LCM, it would be 60. So 5 12s are 12 into 3 is 36 minus, as I explained how to do it, 12 5s are 60, 7 into 5 is 35. So it becomes 1 by 60. Now, we have not been asked the other fraction, we have been asked difference of the two fraction. So difference would be 7 by 12 minus 1 by 60. So taking the LCM once again, 12 and 60, again it will give 60. So 12 5s are 60, that is 35 minus 1, that is 34 by 60. So if we cut it with, since it's not in the lowest term, so we can cut it down by 2. So 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 3s are 6, 0s are. So answer we get as 17 upon 30. Okay, the answer is 17 upon 30. Alright, let's move on to the next question. Find the product of 4 by 3 and 5 by 2, or we can say the product of 4 by 3 and 5 by 2 is. Come on students, quickly you solve this question and tell me what the answer you are getting. 5 seconds is sufficient enough. Chalo, 5, 4, 3, 2, 1. Let's look on. Is your answer 10 by 3? Super amazing, fantabulous, fantastic. So yes, 4 by 3 product into 5 by 2. So if we can cancel anything, yes, we can cancel. 2 1s are 2 2s are 4. So what's left with? 5 2s are 10 or 2 5s are 10 upon 3. And that's what we get the correct answer. Let's move on to the next question. Which number should replace question mark in the given expression? What should replace this question mark so that the left hand side and right hand side should be equal? Good question. Let's solve it. Alright, chalo then. So let's look on first the answer part. So yes, the right answer is 3 if you have got very fantastic, phenomenal. So let's do it, Hana. So let the question mark as it is by 4 plus, let's solve these two fractions. So 6 and 12, if you take the LCM, it would be 12. 6 2s are 12. 2 multiplied with 1 is 2 plus 12 1s are 12. 1 multiplied with 5. This side 3 into 1, 3 plus 1, 4 by 3. So question mark by 4 plus 2 plus 5 is 7, 7 by 12 equal to 4 by 3. Now the question mark by 4 equal to 4 by 3, transposing this on the right hand side. Okay. So yeah, what we can do is, next part is question mark, let it be by 4 equal to, we'll take the LCM, 3 and 4 LCM is 12, 3 4s are 12, 4 4s are 16 minus 12 1s are, and it will remain 7. So now
In order to find the question mark, we'll get the 4 multiplied on this side. So 16 minus 7, that is 9 upon 12, and this 4 gets multiplied there. So 4 ones are 4, 3s are 12, 3 ones are 3, 3s are 9. So ultimately we are getting the value of this question mark to be 3. The value of the question mark is to be 3. Okay, next question. Reciprocal of 2 3 by 5. Very easy question. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. So is your answer 5 by 13? Then very fantastic. So very easy again. 2 3 by 5. Let's get converted this into the improper fraction. It's being there in the mixed form. So 5 2s are 10 plus 3, 13 by 5. And what is the reciprocal of it? It's simply 5 upon 13. Okay. Next question. What should be added to 11 by 48 to get 13 by 16? Good question. Try to solve this. What should be added to 11 by 48 to get 13 by 16? Make a pause of the video, try to solve in the notebook, and then get the answer on the comment box, students. I'm very sure, I do believe all you will be definitely able to solve this. Come on. What should be added to 11 by 48 to get 13 upon 16? Okay, showing the answers in 3, 2, 1. Let's see the answer. 7 by 12. So are you getting 7 by 12? And super amazing, fantabulous. It's very simple. Although the question is good one, you have to understand the statement. Statement को अच्छे से समझना है. What should be added to? कह रहे हैं 11 by 48 में ऐसा क्या ऐड करे? Suppose ये बॉक्स है. ऐसा क्या ऐड करे इस बॉक्स में ताकि ये 13 by 16 आ जाए? So what we'll do is ये बॉक्स की वैल्यू निकालने के लिए 13 by 16 अब ये वाले को उधर भेजेंगे. ठीक है, उसको सबको उधर ढकेल, तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -11/48. साइन चेंज हो जाता है क्योंकि ये इसने एक ब्रिज पार किया. कौन सा ब्रिज? इक्वल टू ब्रिज को पार किया. ओके, और एडिशन का ऑपोजिट होता है सब्ट्रैक्शन. मल्टीप्लिकेशन का हमारा ऑपोजिट होता है जो इनवर्स लिखते हैं वो डिविजन होता है. सो हम लोग एलसीएम ले लेंगे 16 और 48. एलसीएम लेंगे तो 48 आएगा. 16 3s और वो 3 मल्टीप्लाई होगा 13 के साथ. 48 ones are 1 into 11 हो जाएगा. So ultimately if we see here 13 3s होगा 39 minus 11 by 48. That gives 9 minus 1 is 8, 3 minus 1 is 2 by 48. तो इसको हम लोग थोड़ा कट कर देंगे. So जैसे कि हमें पता है 4 के टेबल से काटेंगे. 4 7s are 28 and 4 1s are 4 2s are. तो ये हमारा लोएस्ट टर्म में आ गया 7 by 12 एंड यही तो आंसर है. That's 7 by 12. Alright. Okay. So let's move to the next question. Again, find the value of expression. बहुत प्रैक्टिस कराने वाला हूं, बहुत प्रैक्टिस कराने वाला हूं. So that you get a good concept, good command on the questions. कैसा भी दे दो सर बना लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना है ना. So solve the question. The value of the expression 2 by 3 plus 5 by 6 minus 1 by 9. पॉज करो वीडियो को और सॉल्व करने की कोशिश करो. Pause the video and solve it. Okay, chalo. So let's look into the answer. So its answer is 25 by 80. कैसे निकाली? चलो फिर सॉल्व करते हैं. 2 by 3 plus 5 by 6 1 by 9. वैसे तो हम लोग एक बार में भी कर सकते हैं. ओके, वी कैन डू द कैलकुलेशंस इन वन टाइम आल्सो. ओके,
और वी कैन टेक फर्स्ट द एडिशन पार्ट देन सब्ट्रैक्शन, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, नॉट इशू। सो 3 और 6 का लेट्स से हम लोग पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 6। 3 2 ज़ा 6, 2 into 2 हो जाएगा 4 प्लस 6 into 1 6, 1 into 5 is 5। इसको यूं ही रखने देते हैं। अब ये हो जाएगा 9/6, 4 + 5 9, 9/6 हो गया, ठीक है, माइनस 1/9। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 6 और 9 का एलसीएम लेंगे, 3 से आ जाएगा 3 2 6, 3 3 9, तो कितना आ गया? 3 2 6, 3 18, 6 3 18, 9 3 27 माइनस 9 2 18 2, तो 27 minus 2 25 upon 18, and this is what your answer is। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A bus completed 2/5 of a journey। A bus completed 2/5 of a journey in 4 hours। कह रहा है कि एक बस है जो 2/5 of a journey, एक जर्नी को, है ना, उसका 2/5 जो पार्ट है उसने 4 घंटा में कवर किया। फिर कह रहा है 4/7 ऑफ द सेम जर्नी को कवर किया 3 घंटे में। सो कह रहा है हाउ मच ऑफ द जर्नी डिड द बस कंप्लीट। बस ने 7 घंटा ट्रैवल कराया, राइट? तो बस ने कितना डिस्टेंस कवर करा? बहुत ही आसान सा सवाल है। चलो जल्दी से बताओ कितना होना चाहिए। पॉज करो वीडियो को और सॉल्व करो। ओके, चलो लेट्स लुक इनटू द आंसर। 34/35 आंसर आना चाहिए। 34/35 बहुत ही सिंपल है भाई। यहां से अपन, यहां से ए से बी गया होगा और बी से मान लेते सी गया होगा। सो यहां से यहां ट्रेवल करा 4 घंटे में, यहां से यहां ट्रेवल करा 3 घंटे में। तो भाई हमें बताना है कि कितना डिस्टेंस जर्नी ट्रेवल करा। सो अ बस कंप्लीटेड 2/5 कितना कवर किया भाई? टोटल जो भी डिस्टेंस उसका 2/5 कवर किया। और बीसी में कितना कवर करा? 4/7, तो जो भी उसका डिस्टेंस है, तो टोटल जर्नी का इस दो डिस्टेंसेस में 7 घंटे में कितना टोटल डिस्टेंसेस का पार्ट कवर किया फ्रैक्शन में। सो 7 5 35, 5 7 35, 7 into 2 14 प्लस 7 5 35, 5 into 4 5 into 4 20, तो कुल मिला के आता है 34/35, and this is the right answer। Let's move on to the next question, students। Roshan bought 15 1/2 liter of milk। Roshan क्या किया? 15 1/2 liter of milk लेके आया। Out of this milk, 6 3/4 liter of milk was consumed in the market, making sweets, मिठाई वगैरह बना, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, है ना। तो इन सब चीजों को बनाने में यूज हो गया। तो कह रहा है भाई कितना मिल्क बच गया? जल्दी से बता दो बच्चों, जल्दी से बता दो फटाफट। ज्यादा समय नहीं दूंगा मैं इसमें, बहुत ही आसान सा सवाल। कहता है रोशन ने 15 1/2 लीटर मिल्क लाया, जिसमें से 6 3/4, है ना, मिक्स फॉर्म में दे रखा है। इतना लीटर यूज हो गया, कितना बचा? इज योर आंसर 35/4? तो फिर तो बल्ले बल्ले भाई, ढोलक लिख दो चैट बॉक्स में। काफी देर से ढोलक नहीं लिखे किसी ने, ढोलक लिख दो फटाफट। बिल्कुल। तो हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट? तो मिल्क लेफ्ट कैसे पता चलेगा? पता चलेगा ना सर, टोटल से क्या करने का, जितना यूज हो रखा है उसको माइनस करने का। सो 15 2 30, 31/2 माइनस 6 4 24, 3 27/4। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 2 4 31 इंटू 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 62 माइनस 4 का 4 रह जाएगा, 1 इंटू 27 27, ये बच जाएगा 12 माइनस 7 5, 5 इधर बचा, 5 से 2 गया 3, 35/4 लीटर, एकदम परफेक्ट। 35/4 लीटर दूध बच जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। What number should be multiplied with
25/32 to get the product 5/8। ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करे 25/32 से ताकि हमें प्रोडक्ट 5/8 मिले। 25/32 से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे so that we get the answer as 5/8। बताओ भाई, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करा जाए। ओके, चलो फिर क्या आंसर है 4/5। कैसे पता चला? तो देखो, जैसे मैंने बताया 25/32 के साथ क्या मल्टीप्लाई करा, तो प्रोडक्ट 5/8। तो इस प्रोडक्ट को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉरी, इस क्वेश्चन मार्क जो नंबर से मल्टीप्लाई करा गया उसको निकालने के लिए क्या करना होगा, 5/8 से इसको हमें डिवाइड कर देना है। ओके, इससे हमको डिवाइड कर देना है। तो होगा क्या, 5/8 इंटू 32/25। सो 8 1 जा 8 4 जा 32, 5 1 जा 5 5 जा, बन गया ना 4/5। दैट इज व्हाट आंसर इज। तो 4/5 से अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं 25/32 को, तो आंसर आएगा 5/8। ओके, चलो फिर आज का लास्ट सवाल करते हैं, एकदम गलती नहीं होने का। A tin contains 21 kg of sugar. If 2/3 of it has been consumed, how much sugar is being left? कह रहा है a tin contain, एक टिन के अंदर 21 kg of sugar है। इसमें से कह रहा है 2/3 of it has been consumed, हो सकता है मिठाई बना होगा, हो सकता है खीर बना होगा, तो उसमें से 2/3 पार्ट को यूज कर लिया गया है। So what is the amount of sugar left? So read the question carefully, ध्यान से बनाओ and try to get the right answer. So if your answer is 5 kg, 7 kg, 8 kg, or none of these, what do you think? Okay, without much suspense, let me reveal the answer. Yes, it's 7 kg, 7 kg. Okay, didn't get? Fine, let me tell you. So total quantity of sugar, it was how much? 21 kg. Okay, now 2/3 of being used. Okay, so quantity of sugar यूज हो गया भाई मिठाई बनने में, कितना 2/3। अब 2/3 कितना, 2/3 किसका, 21 kg का ना, सो 21 kg, 2/3 of 21, 3 7 21, कितना आया 2 into 7 14 kg, मतलब 14 kg ऑफ शुगर यूज हो गया। सो क्वांटिटी ऑफ शुगर लेफ्ट, कितना बच गया, 21 kg था, उसमें से 14 kg यूज हो गया, बचा 7 kg। ओके, बचा 7 kg। So students, I hope you enjoyed today's class and you have been able to understand the operations being done on the fractions. तो जल्दी से एक बार लास्ट टाइम ढोलक लिख दो क्लास को साइनिंग ऑफ करने से पहले, so that मुझे पता चल जाए भाई तुम्हें मजा आया। तो okay students, so this was the last question of today's video and now I'm signing off. See you in the next video. Till then, bye bye. Take care.